The chapter is solutions, but we speak it diluted solutions. Why? Because most of the concept which we learn in this case is used or apply mostly for the diluted solutions. Okay, so we goes to the solutions. In a basic concept of chemistry, we have discussed about the different types of the mixture, and there are two types of the mixture. One is a homogeneous mixture and another one is heterogeneous mixture. So among these two, a homogeneous mixture is known as a solution. That is known as what? Solutions. We do not discuss about the heterogeneous mixture. It is not a part to discuss it here. Okay, so solution is a homogeneous mixture. Always solutions containing two components. One is a solute and another one is, solutions have a two part. One is a solutor plus solvent. So solute are those portion which is present in a higher amount, and the solute are those portion which is present in a less amount. This is one of the portion we can identify. Another way we can say that substance in which dissolution take place, or substance that is dissolved. This is a substance which dissolve, or this is a substance in which dissolution take place. Substance in which dissolution take place. Okay, another way is, suppose I have, if substance A and substance B, A is available in form of solid and B is available in form of liquid. When we mix together and the resulting part, if we mix it and the result is a resulting part or a mixture is a solid, or resulting mixture is a liquid. If the resulting mixture is solid, then we can say that substance A is present in higher amount. यहाँ पे substance A ज़्यादा होगा, so substance A is a solvent. अगर resulting solutions is available in the form of liquid, तो हम बता देंगे कि B क्या होगा? Solvent. That means B क्या हो गया यहाँ पे? Soluter. तो A क्या होगा यहाँ पे? Soluter. Right. After that, there are a binary solution, ternary solutions, and we have a quaternary solutions also. In case of binary solution, there are two components. In case of ternary solutions, there are three components. In case of quaternary solution, we have a three component. Let us go ahead. And there are three types of solutions. One is saturated solution, unsaturated solutions, and a supersaturated solutions. Basically, before going to that, we must have to understand what is the mechanism of solubility. ये कैसे soluble होता है, तो ये बहुत थोड़ी सी बात देख लेते हैं.
सपोज A is soluble in B, ऐसी हम बात बोलते हैं, A is soluble in B, A is soluble in B, right? तो dear student, we have to break only for solubility we required only and only to break intermolecular force. Now the question is, what are the intermolecular force? Let us see that also. So there are basically, we speak in this way, this intermolecular force is, first is hydrogen bond, then iron dipole, then dipole force stand for F, then ion induced dipole, then dipole induced dipole, then instantaneous induced dipole, instantaneous induced dipole, induced dipole. तो यहाँ पे मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि ये उसको A बोलते हैं, B, C, D, E और F. तो ये फोर्स, the strength to break a bond is like this. A is the strongest, then B, then C, then D, then E and then F. ये बहुत बार आएगा. अभी हम बताएंगे, हम गुनगुनाएंगे कि the intermolecular force are hydrogen bond, iron dipole, ion induced dipole induced dipole, instantaneous induced dipole force. Okay, let us go ahead. Now here mechanism A is soluble in a B. तो इसमें क्या होता होगा कि the A and A have intermolecular force. The similar way B and B have also intermolecular force. When we dissolve A into the B, then what happens? A bond between the A is going to be break down. The bond between the B is going to be down, and the force between A and B is produced. So what happens here? Two molecules of energy AB is produced. That energy should be higher than to break the AA bond, BB bond. तो इसमें क्या होगा कि जो AB के बॉन्ड बनते हैं ना, that bond energy, bond formation is exothermic process and bond breaking is endothermic process. जो exothermic process है, देखो कि यहाँ से हमें कुछ 25 जूल जितनी एनर्जी मिलती है और उसको ब्रेक करने में हमें कुछ चाहिए 10 और उसको ब्रेक करने में हमें चाहिए कुछ 5. तो then we can say that A is soluble in B very easily. पर यहाँ पे 25 जूल चाहिए और यहाँ प्रोड्यूस होती है. We require a 15 here
and we require 15 here. 15 here means to break this we require 15, to break this we require 15. तो इस केसेस में क्या होगा कि at normal temperature it cannot be break down. So normally जहाँ bond formation exothermic energy should be higher than the endothermic energy. So what happen in this case? In this case it can be easy. अगर ऐसा नहीं होता it doesn't mean it does not dissolve. It dissolve, but we required in this case केस नंबर 2 बोल देते हैं. चलो यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. सो दिस इज अवर केस नंबर 1 जहाँ पे एनर्जी 10 और 5 है. ये हमारा केस नंबर 2 हो गया. In that case also the energy is 15 and 15. In this case we have to give the extra energy. That extra energy कहाँ से आएगी बच्चों? This extra energy is come from, we can give the heating, so it can be dissolved. There are saturated, supersaturated solutions and unsaturated solutions. देखो कि हमारे पास ये कुछ एक सिलेंडर है. The capacity of the cylinder is कुछ 10 ml है. तो इसमें से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. The possibility number 1, possibility number 2, possibility number 3. 10 ml है, उसको मेकअप कर दो और 10 ml तक का जुगाड़ बना दो. तो उसको हम फिल कर देते हैं कैसे? 10 ml से. क्या डाल दिया इसमें? 10 ml. कुछ दिखता नहीं अच्छा वो, ठीक है चेंज कर देते हैं. तो फिर the possibilities of another case is we add a solutions or the solvent that is less than 10 ml. दिखाता है कि इसमें 8 ml डाल देते हैं और यहां कुछ जुगाड़ करके we produce और एक्स्ट्रा मोर देन 10 ml. तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ कुछ ऐसा जुगाड़ करके उसको बड़ा बना के इसमें हमने 10 ml से ज्यादा सपोज 12 ml डाल दिया. तो जितनी कैपेसिटी है इतना ही सॉल्यूशंस इसमें आता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. वी आर सेटिस्फाइड, उसको संतोष है. दिस इज अनसैचुरेटेड और दिस इज अ सुपर सैचुरेटेड. तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आती है. वो कैसे होती है रियली इन केमिस्ट्री में? देखो कि हमने एक ग्लास ले लिया और एक ग्लास में कुछ पानी डाल दिया 100 ml तक और इसमें हम शुगर डालते हैं. सो इनिशियली व्हेन वी ऐड द शुगर, द शुगर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व, शुगर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व, शुगर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व, शुगर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व. तो जब तक शुगर डिसॉल्व होती है वो सब परिस्थिति और कंडीशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, नहीं सॉरी अनसैचुरेटेड. जब शुगर डिसॉल्व होना बंद होती है, जस्ट स्टार्ट पॉइंट, तो उसको बोलते हैं कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी आप उसमें शुगर डालोगे देन इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डिसॉल्व. तो क्या करना होगा? तो उसको हम क्या करते हैं, उबालते हैं पानी उसको गर्म करके. तो व्हाट हैपन, उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगी. जैसे हम वो कुछ मिठाइयां बनाते हैं ना, उस टाइम वी प्रिपेयर द, उसको बोलते हैं चाशनी. सो दैट इज व्हाट, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. उसमें जो कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की उससे भी ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, उसको सुपर सैचुरेटेड